Smartworks IPO opens July 10th. Leadership engages media in Ahmedabad. Smartworks Coworking Spaces Limited is launching its IPO on July 10th, 2025 with a price band of 387 rupees to 407 rupees per share. The offering includes a fresh issue worth 445 crore rupees and an OFS of 33.79 lakh shares. Senior leadership including MD Nitish Sarda, ED Harsh Binani and Chairman Atul Gautam interacted with the media in Ahmedabad on Tuesday, outlining plans to utilize proceeds for debt repayment, new center expansion and corporate purposes. A 37 rupee discount is offered to eligible employees. The IPO closes on July 14th with shares to be listed on BSE and NSE. Report Bilkul Online. Is Nitish Sarda. I'm the founder of Smartworks. We're coming up with an IPO of 582 crores, in which 445 crores is the primary raise and an OFS component. The remaining is the OFS component. Smartworks today is India's largest managed campus platform. We manage a little over 10 million square foot spread across 15 cities in the country. We've been able to scale this business across every part of the country, where we have distributed our presence in the northern, western and southern part of the country. We're coming up with this IPO to fund the growth journey of the company. Thank you. What makes you different from the US? So I think our approach, flexible workspace in general in India is doing very, very well. The industry has grown from zero to almost 80 million plus square foot, in which it's taken the industry by a storm. This number is projected to go up to about 142 million square foot in the next 2 to 3 years. We really think that there is an opportunity where we've created a differentiated product in which we take large campuses and focus on mid to large enterprises to come and occupy these spaces. We've created a differentiated product which has allowed us to grow 1.5 times faster than the industry. Your presence in Gujarat, how much is that, and do you wish to extend it? Absolutely. We started our presence in Gujarat with Ahmedabad. Ahmedabad was a critical city to be in. I think Gujarat has a lot of potential with cities like Gift City, Surat, Rajkot, also seeing a lot of evolution. So it's a very interesting time to be. While all of India is growing, I think there is a lot of opportunity in Gujarat as well. Thank you. Thank you. All the best. Hello, my name is Harsh Binani. I'm the co-founder of Smartworks. I completed my graduation in economics from SRCC as well as finished my MBA at Kellogg. Previously, I worked for McKinsey. It has been a very, very exciting journey building Smartworks into what is now the largest managed campus platform in the country in a very short span of less than 8 years, which includes 2 years of COVID. The company has been able to scale up. We have a very unique differentiated business model where we take large campuses, we convert them with a lot of amenities and then focus and get large enterprises to come and use the office as a one-stop solution. Whether they need their utilities taken care of or a tea or coffee, it's like a hotel service where everything is under one roof and we become their pan-India partner across the board. We are now embarking on a very interesting journey for the company through the IPO journey, which we believe is only a comma, not a full stop in our journey. And in this entire journey, we'll continue having a lot of commas. We are in a young India, which requires a lot of new age workspaces for the modern workforce. In India's ambition to become a developed economy by 2047, we will require a lot of these spaces. And in a very short span, you can just see the potential of what we've done. We've penetrated less than 1% of India. And on a go-forward basis, the company will continue focusing in a post-IPO environment to scale our core platform. Thank you very much. A very good afternoon and a warm welcome to one and all present over here. Ladies and gentlemen, I, Shivam Pathak from Adfactors, welcomes you all on behalf of
Smartworks Coworking Spaces Limited. I also would like to thank you all for taking out time and from your busy schedule and joining us over here for this great and special occasion of company's forthcoming IPO. But before we initiate, let me first introduce the dignitaries on the dais. We have with us Mr. Nitish Sarda, who is the Managing Director for the company. On his left, we have Mr. Harsh Binani, who is the Executive Director for the company. We also have with us Mr. Atul Gautam, who is the Chairman and Non-Executive Director for the company. In the left side corner, we have with us Mr. Sahil Jain, who is the Chief Financial Officer for the company. We also have Mr. Anirudh Tapuria, who is the Chief of Strategy and Investor Relations. And last but not the least, Mr. Prateek Agrawal, who is the Chief Business Officer for the company. Ladies and gentlemen, representing the BRLMs, we have with us Ms. Prachi Malkan, who is representing JM Financials Limited over here. Without wasting any second, let me welcome Prachi Malkan from JM Financial Limited, the BRLM for the issue, to kindly proceed. Good afternoon, everyone. It's a true privilege to welcome you all to the press conference for the IPO launch of Smartworks, a significant transaction for all of us, and JM Financial is honored to be the left-leading book-running manager. Smartworks is transforming India's commercial real estate landscape by blending technology with premium co-working spaces, offering tailored workspace solutions that enhance enterprise productivity and flexibility. Through its asset-light and highly scalable model, Smartworks leverages advanced analytics and real-time management tools, setting new benchmarks in the workspace efficiency and client experience. Please allow me to outline the key specifics of this IPO. The total IPO size is INR 583 crores, which consists of a fresh issue of 445 crores and an offer for sale of 138 crores. The price band is INR 387 to 407 per equity share. The issue opens to the public on Thursday, July 10th, 2025 and closes on Monday, July 14th, 2025. And the shares are to be listed on both BSE and NSE around July 17th, 2025. Thank you. Thank you so much, Prachi. Before management and you get Ernst & Young है, ग्रो हमारे साथ मल्टीपल सिटीज़ में बैठता है, आप L&T जैसे स्टेबल कंपनीज भी हमारे साथ मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिसेस लेकर रखे हैं. Of all the buildings that you have, what is the rate of your own buildings and how many are on lease? 100% is on lease, ma'am. We are a completely asset light model. हम कुछ भी बिल्डिंग्स खुद नहीं बनाते, नहीं खरीदते हैं, हम लॉन्ग टर्म लीजेस पे देते हैं. इसके कारण सिर्फ 500 करोड़ रुपए डालकर इस बिजनेस को इस रेट पे स्केल कर पाए हैं कि आज ये 1300 करोड़ से ज़्यादा की रेंटल रेवेन्यू हमको देता है. हम बिलीव करते हैं व्हेन एसेट लाइट मॉडल में आप एक बिल्डिंग को लेकर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को लेकर स्मार्टवर्क्स ब्रांड लगाकर लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स को दे सकते हो जो अदरवाइज उस बिल्डिंग को देख नहीं रहा था. इसमें आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू बोथ फॉर योर लैंडलॉर्ड एज वेल फॉर योरसेल्फ क्रिएट कर सकते हो. तो इसमें हम एक भी बिल्डिंग हमारी ओन्ड नहीं है, इट इज ऑल लीज्ड. And what is the average occupancy rate? सर मैम अगर आप हमारे ऑपरेशनल सेंटर की देखेंगे तो हमारी कमिटेड ऑक्यूपेंसी 89% से ऊपर है. 89%. Could you tell us about your Ahmedabad operation in some detail as a case study of center? Absolutely. Before I talk about the Ahmedabad property, sir, we follow something called cluster strategy. हम कोई भी शहर में या कोई भी शहर के एक पार्ट में ना सीधा जाके 6-7 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग नहीं लेते. पहले हम एक छोटी बिल्डिंग से शुरू करते हैं 50,000 60,000, फिर उससे 1 लाख 1.5 लाख, फिर उसके बाद 3 लाख, फिर उसके बाद 4 लाख, फिर 7 लाख. हमारी लार्जेस्ट एसेट जो है वो 7 लाख स्क्वायर फुट की है जिसमें 10,000 लोग हर रोज आते हैं. इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सर हमने अहमदाबाद में एक सेंटर है हमारा आज के दिन में जिसमें अबाउट आई थिंक 35 या 40,000 स्क्वायर फुट की वो सेंटर है. जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है हम बड़े सेंटर्स करते रहेंगे. अभी के लिए हमारे पास अहमदाबाद में एक ही सेंटर है, बट विद
as and when the cluster strategy allows us to grow, we'll keep growing in the cities. You're in the Venus building on Nehru Nagar, Satellite Road, right? Ji. So how much of that building have you rented? So who have you, rented it to? How many floors is it? What infrastructure you have inside? Do you have a cafeteria and a medical center? I want some more details so that our investors in Ahmedabad can relate a little to the company. Absolutely. So to add to Nitish's point, so we have 2 floors in Venus Stratum. It's roughly about 55,000 square feet put across the 2 floors. Considering the size of the center, we've planned amenities accordingly. So we have a smaller cafeteria, there are common meeting rooms, there's a reception, waiting lounge, etc. Coming to the tenants, in line with our business model, we've leased it to mid to large enterprises. That center currently is about 100% occupied, with the anchor tenant being Accenture. Then we have customers such as Federal Bank, Concentrix, who are occupying the balance space. These are also multi-city clients who occupy space with Smartworks in other cities as well. तो अगर आप कंसेंट्रिक्स देखेंगे सर, हमारे आरएचपी में भी उनका एक केस स्टडी है। कंसेंट्रिक्स हमारे साथ 5 सिटी में बैठा है 7,500 सीट से ज़्यादा के साथ, 6,500 सीट्स के साथ। तो उन्होंने बहुत सारे सिटी में यही मॉडल को रेप्लिकेट किया है। But 2 floors in a very large building like this Venus Center is not very much. So how it doesn't really constitute a campus? So in cities like Ahmedabad, the first center is always a smaller center, sir, as I mentioned, because we follow the cluster strategy. जैसे जैसे हमारा बेस ग्रो होता है, we keep going bigger. तो जैसे हमने बॉम्बे में भी स्टार्ट किया था, तो पहले 55,000 से स्टार्ट किया, फिर हमने 1 लाख 1.5 लाख की बिल्डिंग ली, फिर हमने 2.5 लाख की बिल्डिंग ली, उसके बाद हमने 5 लाख की बिल्डिंग ली, अभी रिसेंटली हमने एक 8 लाख की स्क्वायर फुट की बिल्डिंग साइन की है। तो वी प्रोग्रेशनली ग्रो अप डिपेंडिंग कि हमें कैसा डिमांड मिल रहा है। ऑल्सो इस इंडस्ट्री में बिकॉज वी आर ग्रोइंग पैन इंडिया, देयर इज ऑल्सो अबाउट एलोकेशन ऑफ कैपिटल कि आपको कहाँ से अभी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहा है जहाँ आप ग्रो करोगे। How do you seek the feedback and is there any? एक पॉइंट और ऐड करना था जो सर का क्वेश्चन था। सर जो आपका एक पॉइंट है कि जो सेंटर का साइज है वहाँ पे हमने खाली 2 फ्लोर लिया, एक वैलिड पॉइंट है। जो पॉइंट अभी नीतीश बोल रहे थे, अगर सर आप हमारा लार्ज सेंटर का ब्रेकडाउन देखते हो, अगर हमने उसको अपने आरएचपी में डिस्क्लोज भी किया है, सबसे बड़ा सेंटर हमारा 6,99,000 स्क्वायर फीट का है, सेकेंड बिगेस्ट है 6,89,000, थर्ड बिगेस्ट है 6,13,000, फोर्थ बिगेस्ट है 5,52,000। तो हमारा मॉडल वो है सर। अगर आप हमारा एवरेज सेंटर साइज भी देखते हो, वो भी हमने डिस्क्लोज किया है, वो 1,80,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। हमने यहाँ तक भी डिस्क्लोज किया है कि अगर आप 2025 का हमारा एवरेज सेंटर साइज देखते हो तो वो भी इससे ज़्यादा है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट वेयर वी आर ऑपरेटिंग, मिड टू लार्ज वहाँ टारगेट करना। एक पॉइंट हमने शुरू में भी बोला था कि हम जो माइक्रो मार्केट्स में हम जहाँ पे प्रेजेंट है, हमने आरएचपी में भी डिस्क्लोज किया है कि हमारे फुटप्रिंट में जहाँ पे माइक्रो मार्केट में आज के दिन स्टॉक है और फ्लरिश कर रहा है फ्रॉम अ फ्लेक्स स्पेस पर्सपेक्टिव, हम वहाँ पे 90% से ज़्यादा 94% प्लस हमारा एक्चुअल प्रेजेंस उस सेगमेंट में है। तो माइक्रो मार्केट स्ट्रैटेजी, पैन इंडिया स्ट्रैटेजी, क्लस्टर स्ट्रैटेजी, ये सबका मिश्रण होके फिर हम सेक्टर चूज करते हैं। What is your CSR activity? And one humble suggestion was like, for students and all, do you rent or give some offices on lease? बिल्कुल, वी आर अ वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी। आज के दिन जहां हम 1 करोड़ स्क्वायर फुट मैनेज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं विच आर मोर टुवर्ड्स द कम्युनिटी। सो फॉर एग्जांपल हमारा बैंगलोर का पूरा एनर्जी सोलार के थ्रू आता है, पुणे में भी अब वो सेम चीज़ हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इस दौरान, 4,000 से ज़्यादा ब्लू कॉलर स्टाफ भी हमारे साथ डिप्लॉयड है। वो और उनके फैमिलीज़ को भी एम्प्लॉयमेंट स्मार्टवर्क्स के ज़रिए होता है। और जब हम बड़े कैंपसेस करते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉमन एरिया भी होती है। उस कॉमन एरिया में बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, वी इनवाइट NGOs, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जहाँ हमारा टीम का इनिशिएटिव ये रहता है कि वो स्पेस उनके इवेंट्स को करने के लिए, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, वो हम फ्री में उपलब्ध कराते हैं। एक एग्जाम्पल है जिनके साथ हमारा बहुत बड़ा टाइप है, इज़ रॉबिनहुड आर्मी। रॉबिनहुड आर्मी का सारा इवेंट्स पैन इंडिया सारे शहरों में स्मार्टवर्क्स में ही होता है, क्योंकि वो भी नॉन प्रॉफिट है, हम उनको कुछ चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट हम प्रपोज करते हैं कि जैसे जैसे उनका काम बढ़े, जैसे जैसे खाना वेस्ट हो, वो बहुत बार होता ही है सारे सेंटर्स और कैंपसेस में,
वो भी क्यों वेस्ट जाए, क्योंकि इतनी कम्युनिटी है आसपास, उनको उसका एडवांटेज मिल जाए. तो Robinhood is one example. As company continues to scale up and grow, we will also look at more initiatives and provide more employment and be responsible for the community. What is your complaint redressal system? Ma'am, we have a internal ticketing system. So every employee of a company as well as every company वो हमारे एक पोर्टल का टेक प्लेटफॉर्म का एक्सेस है. उस टेक प्लेटफॉर्म में अगर आप यहाँ देखेंगे टिकटिंग डैशबोर्ड है. कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो ऑफिसेज के अंदर, इट कैन बी एड्रेस्ड विद इन दैट टिकटिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो. So we've used technology in a way जिसमें हम पूरी की पूरी एक्सपीरियंस को ना कम्प्लीटली सीमलेस करें. आदमी ऑफिस के अंदर आ रहा है तो अपने कार पार्किंग बुक कर सकता है, आने से पहले अपने लिए एक्सेस कंट्रोल उसके फ़ोन के थ्रू कर सकता है, अपने लिए टी कॉफ़ी वाटर खाना फ़ोन के थ्रू ही ऑर्डर कर सकता है. तो हमने बहुत डिजिटली इनेबल किया है अपने सारे बिल्डिंग्स को. Kindly like, subscribe and hit the bell for more such videos.